Yeah, I'm just giving him permission. Already I gave him permission. Can you check with me? Okay. Yeah, he's recording. Yeah, thank you. This Thank is you, Pastor. recording. Yeah. हेलो दान बहादुर भाई के दान बहादुर द जय मसी हेलो धनराज जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसी जय मसी जय मसी these are from Nepal. These two pastors are from Nepal country, Nepal. Nepal. We have a pastor from Nepal, we have a pastor from Bhutan, we have a pastor from different state of North India. Almost 8 pastors you will get here. Okay. Bienvenidos. Welcome. Bienvenidos. Welcome. I from Canada. Hi, Dhanraj, guitar player ready. Yes. But I'm now in Suecia. Svenska. Okay. Yes. Pastor, you tell Pastor she is my wife. Her name is Rachel. Su nombre es Raquel, es su esposa, Rachel. Ah, God bless Raquel. She's smiling. Yeah. Always a smile. Hi, Dhanraj, एउटा guitar निकाला ना. Yes, there may be more than 30 pastors will be joining us together. So exactly by 8 o'clock they will be joining. Let's sing some song. We have one pastor from Nepal. He's going to sing some Nepali song. Bhai Dhanraj Sahi. Están presentando los de todos, Hello? están presentando el que viene de Nepal. Te enteraste de todo, ¿no? Vale. Damn, I forget. I'm sorry. आज तो 3 लोग ये करेंगे ना. हेलो. आज 3 लोग करेंगे. हाँ आज 3 लोग करेंगे. ओके. हेलो. हेलो. हाँ 3 लोग करेंगे आज हम. थैंक यू. Pastor Okil Das. Pastor Okil Das. Pastor Quique, que si los estás mirando a ellos. Sí, correcto. Yes, they're looking there. No te olvides de traducir, Marta. No, pero es que lo que estaban diciendo antes no los entendía ni yo, ¿eh? Ah, vale, correcto. Estaban hablando en otro idioma. बंधन में तुमको को होस्ट बनाया हो, एक्सेप्ट करना. ठीक है. Marta? मैं नहीं करूँगा. Yes. Excuse me, I'm here. Okay, भाई. Dhanraj. I'm sorry. Okay. Okay, bhai, can you sing some Nepali song? Okay. I think his net is... ¿Quieren cantar una canción de Nepal? Bien. Very good. Net problems है क्या? Yeah, here, let me introduce few pastor. Later we will continue to introduce. Here is Pastor Okil Das. Can you read the name? He is my good friend. He is from Bihar. He is serving in a community. He is the... Muy buen amigo. He has a small business making momo, you know. He has a small business making momo and he is doing wonderful ministry. Okay. Yeah. And here Bandhan is there. Bandhan Paswan. Can you hear? Esperará que digas encantado o cualquier cosa porque es que no le entiendo todo. Están hablando de la amistad de Nepal que tiene y que les une y creo que va a cantar una canción. Vale. Here, Bandhan Paswan is there. Bandhan, can you open the video? Let me start. Bandhan is my disciple. He is now, he is a pastor of a church in near Nepal border. He is in India only. Amen. Excuse me, I have a visit from my grandson. Bye-bye. Okay. Here we have a pastor, Bandhan. He is my disciple, first disciple, now he's a pastor. Praise the Lord. Está presentando los Quique. Hello, God bless Hello. you. God bless you. Yeah. And here we have a pastor, Dhan Bahadur. He is also from Nepal. We have a Rohit Kumar. He is also one of my believers. And we have a brother Dhanraj Sai. एउटा गीत गाऊ त भाइ. हुन्छ सर हुन्छ.
हामी एउटा कोरस गाउने छौँ पानी राजको जारी आओ भजो पवित्र जाति बजाई मुक्तिदाता फुले प्रिय महिमाको राजा Hallelujah, Hallelujah, Okay, thank you. Amen. Okay, bhai, can you sing one Hindi song? Hindi song also? जय मसीह जय मसीह जय मसीह। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। मैडम जय मसीह पास्टर नेहा वाला है। स्तुति आराधना ऊपर जाती आता है भाई हिंदी सॉन्ग? थोड़ा आता है सर। चलो गाओ, शुरू करो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। यीशु Amen. And God bless you. Okay, thank you brother for the wonderful song. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. Now let us pray to God so that we will not have a network problem.
Uptown we have the net problem here because I live in a village. So let us pray that God to have a mercy upon our network so that we will have a very good network. आइए हम अच्छा नेटवर्क के लिए आज का सेवा संगति के लिए प्रार्थना करते हैं. Yeah, you can translate, sister. Ok, creo que está esperando que te traduzca y a saber, porque han dicho tanto de golpe, tienen algún problema con el network, pero también es que mezclan una cosa y la otra y va a ser un poco complicado. Así que espero que confíes en Dios, que vas a poder entender lo que está diciendo. Amén. Me gustaría, Amén. आइए हम सब मिलकर. amén. En primer lugar, me gustaría que pudiésemos elevar una oración. He won't pray. He would like to pray together from God, okay? In this moment, he would like to pray. Yes, this Podemos this orar. moment we want to pray. Podemos orar cada uno en nuestro propio idioma y no vamos a usar traducción en esto porque creo que el Espíritu va a unir nuestras plegarias y va a hacer de que hoy sea derramado sobre nosotros su poder. Así que vamos a orar. Wait. He will like pray everyone in different language, short, but in our language. Only for said, God, please help us and bless our life, okay? Yes? Amen. Do you understand to me? Yes. Okay. Yes. आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं अपने अपने भाषा में. सब अपना माइक को अनम्यूट करिए. प्लीज अनम्यूट योर माइक so that let's pray in our own language. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. Amén. हालेलुया. Amén. ओ प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं. Padre Santo, queremos तेरे नाम की alabarte en महिमा esta tarde. धन्यवाद करते हैं सारे बाबा Queremos dirigirnos a tu presencia para rogar, Señor. Thank you, Father, for En este momento nos visites, Padre, que derrames sobre nosotros el Espíritu Santo de la promesa y que hables en nuestros corazones, Padre. Toma mi lengua, Señor. Toma mi inteligencia, toma mi corazón en este momento, Señor. Confiante en el glorioso nombre de As we Cristo come Jesús. before you, God, we pray for all the network problem in the name of Jesus. We command all, there should not be any kinds of problem. अच्छा नेटवर्क दीजिए परमेश्वर Let पिता every ताकि pastor's network work properly, oh God. So nobody can disturb this meeting, oh God, Lord Almighty. प्रभु जी हम दुआ करते हैं सब मिलके कोई नेटवर्क में डिस्टर्ब आने वाले आत्मा को in the name of Jesus यीशु के नाम में परमेश्वर पिता. प्रभु आज जो प्रभु तेरे दास प्रभु हमारे बीच में ओ प्रभु है परमेश्वर पिता. तेरे दास को हम आशीष करते हैं परमेश्वर पिता. Oh God, as he has come all the way from Spain, oh God, तेरा दास जो स्पेन से हमारे बीच में है प्रभु, तू अपने दास के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना मांगते प्रभु तू सहायता करना, मदद करना परमेश्वर पिता. ओ प्रभु आज का हमारा प्रोग्राम एक आशीषमय होने पाए परमेश्वर पिता. आज का प्रोग्राम से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता. मदद कर सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए. In the name of Jesus, all network problem we command in the name of Jesus go. Oh, in the name of command your blessings. We command your blessings. Hallelujah, 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 प्रभु जी. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर. Okay, we have one brother from Nepal. Brother ये रसाइली Sisa Khadak Bika will pray in Nepali for the today program. There should not be any kinds of disturbance in the connection. Amen. Yes, Amen. brother Khadak, can you just pray in Nepali? Okay, I Okay, think his net is not working, so yeah, please. सर्वशक्तिमान जीवितालु परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं आजको यो सुन्दर अवसर प्रभु तपाईले हामीलाई यसरी हाम्रो यो मिडियाद्वारा परमेश्वर पिता प्रभु आजको मिटिङमा प्रभु विभिन्न ठाउँबाट प्रभु तपाईका दास दासीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नुभयो ताकि प्रभु हामी तपाईको वचनबाट हामी सिक्न सकौं तपाई परमेश्वरको वचनबाट अझ प्रभु हामी परमेश्वर पिता अनुग्रह आशीष पाउनको लागि यो प्लेटफर्म द्वारा प्रभु तपाईले हामीलाई जोड्नु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौं हाम्रो दाजु परमेश्वर सागर दाजुको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं जसले प्रभु हामीलाई यो अवसर यो प्लेटफर्म जुटाउनु भयो र परमेश्वर पिता जति पनि यो टिममा परमेश्वर अहिले सहभागी तपाईका सेवकहरू छन् जुन तपाईको दासले आज वचन
प्रभु हाम्रो बीचमा ल्याउनु हुनेछ हरेकलाई तपाईको हातमा राख्छौं तपाईको पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा हामीलाई चलाउनुहोस् ताकि प्रभु यो मिटिङ हाम्रो लागि एउटा ठूलो परमेश्वर पिता उत्साह र जागृतिको कारण बन्नको लागि म प्रार्थना गर्दछु प्रार्थना माग्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन Amen. Amen. So we have a Pastor Bandhan. He will pray in Hindi. Pastor Bandhan, Hindi में प्रार्थना करो. खुदावन परमेश्वर पिता हम इस समय आपके पास आते हैं आपसे दुआ करते प्रभु जी सुंदर सा मौका दिया प्रभु जी फिर से एक बार संगति करने के लिए इसलिए हम धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते आज का टीचिंग को परमेश्वर आज का और परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज का नेटवर्क मिलने के लिए प्रभु जी सहायता कर मदद कर पिता परमेश्वर आज परमेश्वर पिता हम लोग को समझने के लिए प्रभु जी सहायता कर मदद कर प्रभु जी और आज का स्पीकर को परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता ताकि प्रभु जी वो मिलकर हमें अच्छे से शिक्षा देने के लिए परमेश्वर का वचन देने के लिए प्रभु जी आशीष कर दीजिए परमेश्वर पिता अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर बढ़ा दीजिए प्रभु जी ताकि प्रभु जी वो अपनी महिमा ओ प्रभु आप अपनी महिमा उनके द्वारा प्रभु जी हम लोग के ऊपर हम लोगों के अंदर में आने के लिए सहायता कर परमेश्वर पिता ताकि परमेश्वर पिता हम लोग सीख करके प्रभु जी आपके राज्य के लिए आपके उपस्थिति के लिए हम लोग जीने पाए परमेश्वर पिता ताकि प्रभु जी आपके द्वारा बहुत ऐसा काम होने वाला है परमेश्वर इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस समय परमेश्वर पिता सुंदर सा समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज 3 लोग प्रभु जी ट्रांसलेट करेंगे प्रभु जी उन तीनों के द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा उतरने पाए पवित्र अग्नि उतरने पाए हम लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता ताकि प्रभु जी हम लोग प्रभु जी पवित्र आत्मा को पा करके प्रभु जी ओ परमेश्वर आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जी ताकि परमेश्वर पिता हम सब मिल करके प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जी भिन्न भिन्न जगहों में प्रभु जी ओ परमेश्वर नेपाल में परमेश्वर इंडिया में परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी ओ बाहर में विदेश में परमेश्वर जो भी भाई बहन है प्रभु जी सभी को जीवन में बड़ी सामर्थ आज उतरने पाए प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी ताकि प्रभु हम लोग मिल करके प्रभु जी एक सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज का मीटिंग को अरेंजमेंट करने वाला परमेश्वर भाई सागर को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता आप जानते हैं उनके दिल को परमेश्वर किस प्रकार से वो टीचर को ढूंढ करके प्रभु जी हम लोगों के लिए परमेश्वर जो ओ प्रभु वचन सिखाने के लिए प्रभु जी मदद कर रहा है परमेश्वर उनको तेरे हाथों में समर्पण करते उनका नेटवर्क परमेश्वर पिता वो सही से रहने के लिए प्रभु जी सहायता कर परमेश्वर पिता ताकि प्रभु जी हम लोग मिल करके प्रभु आपके सेवकाई में आशीष पाने पाए प्रभु जी पिता हम धन्यवाद करते आदर महिमा भक्ति प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मानते पिता आमीन Amen. 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 Yes, Sister Martha, can you please lead us in prayer? Yes, of course. Querido Señor, es increíble lo que puede hacer la tecnología en la actualidad para permitirnos que nos unamos del norte, del sur, del este y del oeste, sencillamente para honrar tu nombre, para aprender juntos y para reconocer, Señor Jesús, que hoy menos que nunca hay fronteras que nos dividen. Aquí estamos de tus hijos, no nos entendemos de una manera normal, pero haremos el esfuerzo de escuchar a través de tu espíritu lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amen. 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 Thank you very much, Sister Martha. So we welcome you everybody in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज सबको प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है. सो आज हमारे बीच में बहुत दूर से स्पेन से हमारे गेस्ट लोग हैं. सो ओबेद दाइ तपाई को होस्ट हुनुहुन्छ मलाई हेल्प गर्नुस् ल जो आउँछ एक्सेप्ट गर्नलाई. ओके भाइ. Okay. So actually this is our small Bible study group. ये हमारा छोटा सा Bible study group है जहाँ we have a pastors from Nepal, we have a pastor from Chhattisgarh, we have a pastor from Odisha, we have a pastor from different part of the North India. So every week, once in a 3 week, we just have this. Stop. I won't translate the Pastor Kike what you said. Está diciendo que aquí estamos presentes
pastores de muchos lugares del norte de la India. Los ha mencionado Aleluya. todos. Ni me puedo nombrar los nombres, pues son súper complicados para nosotros, pero está diciendo que este pequeño grupo está compuesto de gente de muchos lugares distintos, lo cual ya es obvio, ¿no? Sí. Okay, I'm sorry, continue. Yeah, yeah. So we have a group of independent pastors, and we just since the lockdown started, we have started this ministry. Come together to pray for each others, to lift up each others. Me parece súper lindo lo que está diciendo, porque desde que comentaron tu ministerio juntos, tratan de tener un tiempo para orar y para ponerse de acuerdo y reunirse, ¿sabes? Y conectarse. Es a grosso modo lo que está diciendo. It's very nice. Oh. Estoy Yeah, emocionado. Kike said, the pastor Kike said he's Yeah. impressed about your love and your decision to be together, to pray together from God. This is really very special. Yeah, thanks to God for that. We feel we have today blessed. two new person. Brother Suraj from Nepal. Hello. Yes, brother. Hello. Yeah. Are you from Nepal? Yes, sir. Yes, Okay. brother. Okay. And, Yeah, great. So this is the first time you are joining us. yes, sir. Okay, you are This is the very first much time. welcome. Thank you so Our much. weekly Bible study. Yeah. दाजु सुरज खडक- मेरो साला हो, मैले बुटोलबाट जोइन गरेको। सुरज Okay. सुरज Very एसियन glad. Okay, very glad to have you. And we have another new pastor, Khadak Bahadur Bika. So thank you, bhai, for joining us. You are most welcome to join us every Monday, Wednesday, and Saturday. We have a 3-day Bible study in a week. Thank you, Pastor Okay. Khadak and Pastor Sunal. So this is the time. Actually, we have a pastor from different part of. Let me introduce you. Actually, if I let them introduce themselves, it will take more time. So let me introduce to you, sister. Okay. Are you talking with Yeah. me? Yeah, I'm talking with you. Okay. Do you want to know something about my ministry? Actually, we first you please introduce yourself, then Pastor Kike will introduce himself. Okay. We are friends since all I can remember. Many years ago, we studied together in the seminary. Him and his wife are very special from my heart all the time of my life. They served God many times, and I was traveling to Latin America North, in Colombia, Venezuela, Costa Rica, Mexico. I was working from serving Jesus in the Salvation Okay, let Army. me translate. Yeah, let me translate in Hindi. Okay, I'm So sorry. Ahora es al revés. Okay. Traducción al hindi. Yeah, actually, we have a very special guest today, Pastor Kike. He's my Facebook friend. So we welcome you, Pastor, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. So actually, Pastor Kike, he's from Spain. Sorry, let me speak in Hindi. Pastor Kike जो है स्पेन से है, वो मेरा Facebook friends है. हम लोग काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, पास्टर कीके को इंग्लिश नहीं आती है, मुझे उनका लैंग्वेज नहीं आता है. सो हम लोग गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं. सो सिस्टर मार्था जो पास्टर कीके की दोस्त है, सो मैंने पास्टर कीके को बोला यदि आपका कोई अंग्रेजी बोलने वाला है तो उसको लाइए ताकि आप ट्रांसलेट करके प्रभु का वचन सुना सकते हैं बोल के. सो पास्टर कीके और सिस्टर मार्था ये दोनों दोस्त हैं कॉलेज लाइफ से. सो सिस्टर भी सेवा करती है, वो भी एक पास्टर है, और पास्टर कीके भी पास्टर है ये स्पेन में. या प्लीज कंटिन्यू सिस्टर. Now is it turn, Kike. ¿Perdón? Yeah, this is time for you. Ahora esto es para ti. Vale. Ahora es tu tiempo. Tengo que coger un poco de respiro. He needs to breathe. This is a very, very nice moment from him. De verdad que el mundo tiene que enterarse de lo que está pasando aquí hoy.
he would like the rest of the world could imagine what's happening in this moment, because we are talking from different parts of the world and we are together here only in this computer. Por mucho... Pastor बोल रहे हैं, let me translate, Pastor. Pastor बोल रहे हैं कि perdón. Okay. ये पास्टर बोल रहे हैं ये बहुत ही खुश का बात है, क्योंकि हम दुनिया के अलग अलग कोने से हैं, अलग अलग देश से हैं, लेकिन एक जूम के माध्यम से एक परिवार के साथ एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं. ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट है उनके जीवन का, ये बोल रहे हैं. Okay. Now it's your Please. turn again. Ahora otra vez, Quique. Yo quiero expresar mi agradecimiento más sincero y bendecir a cada uno de ustedes. Now he wants to say thank you so much for every one of yours, and he wants to bless all your life. Everyone, we can know your names, but the Lord knows all of you, okay? He wants to say bless your life. He wants to bless your life. Yo tendría que... बोल रहे हैं वो सब आपके आपके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको आशीष देना चाहते हैं. पास्टर आपको नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पास्टर बोल रहे हैं कि हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, आपको आशीषित करेंगे बोल रहे हैं. Please. Yo tendría que sentarme aquí y aprender de cada uno de ustedes, ver cómo su fe y dedicación al Evangelio se expresan de una manera tan grande en situaciones tan difíciles. Okay. It's obviously we are absolutely different. And he would like to tell you that he would like to be sitting from you, because you express your faith and your love to Jesus in a very special way. That's incredible for us. Do you understand? पास्टर बोल रहे हैं कि पास्टर बोल रहे हैं कि मैं आपके सामने केवल बैठना चाहता हूं कि आप लोग इतने मुसीबत भरी जगह में सेवकाई करते हो, आपका जो विश्वास है वो बहुत ही मजबूत विश्वास है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बोल रहे हैं पास्टर. Ustedes sirven a Jesús en la misma forma que lo hacían los primeros creyentes allí en Galilea. He think that the way that you serve Jesus is same that the first followers many years ago in Galilea. अब देखिए जिस तरीका से आप लोग सेवा करते हैं, तो उनको ये याद आ रहा है कि बहुत साल पहले यीशु भी इसी तरह की सेवा गलीलिया में करता था, उसके इनको याद आ रही है. Sirven a Dios en medio de la persecución y las necesidades. Because you know perfectly what it means to have difficulties and problems and troubles and necessities different for us, okay? You know exactly what it means to have difficulties. So आप लोग को मालूम है मुसीबत क्या होती है, तकलीफ क्या होती है. ये बातें पास्टर भी अपने जीवन में झेल चुके हैं. So इसके लिए पास्टर बोल रहे हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. La medida de vuestra fe es extraordinariamente grande. Your faith is too big. It's really big. Awesome. आपका विश्वास है बहुत बड़ा है. आपका विश्वास किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. Nosotros venimos de un país donde hay libertad religiosa y sin embargo hemos cambiado la fe en Jesús por el confort y la comodidad y las distracciones. So sad, Dad, because that is true that in Spain we have another spirit. We are comfort in our homes and the people don't want to hear the message.
the people don't want to listen anything because we have a lot of distraction in the world. That's true, really. अब देखिए ये बोल रहे हैं स्पेन देश में कोई इस तरह मिलके प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे कलीसिया हैं, क्योंकि लोग बहुत आनंद में रहते हैं, कोई किस्म का तकलीफ नहीं है, सतावट नहीं है, वहाँ इस तरह का जिंदगी है। लेकिन इससे जस्ट उल्टा आप लोग के साथ है। आप लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए एकजुट होते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। ये बहुत ही आशीष की बात है, कहते हैं। Amén. Tengo que decirles que a pesar de todo esto, el que nosotros podamos estar hoy aquí juntos no es ninguna casualidad. That we are here in this moment together, because we are together, is not any something in the affair. It's special. क्योंकि लेकिन आज जो हम यहाँ हैं, ये हम किसी के बदौलत नहीं है, ये एक प्रभु की ओर से बहुत अद्भुत है। En Isaías capítulo 55 y versículo 5 leemos: He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. I have not my Bible here, but he is reading Isaiah 55:5. Do you have the Bible over there? And you can read for the people? Okay. We have the Bible. Can you repeat the verse? Isaiah 55:5. Okay. Isaiah का किताब 55 का 5. Pastor. Lo podemos reducir. 55 का 5. Okay. सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, ऐसी जातियों को जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरा परमेश्वर यहोवा इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायाम किया है। Llamarás a gente que no conociste. Then you call people that you never know. Y gente que no te conocían correrán a ti. Yeah, just please let me mute everybody. Let me mute everybody because sometimes we are getting disturbed. Okay, now I can unmute you. And I can unmute Pastor. Yeah, can you please unmute yourself? Yeah. Okay. Pastor, can you unmute yourself? Dilo otra vez, Quique. Pastor Quique. Please unmute yourself. Felipe, tienes que darle, es que paró a todo el mundo y tienes que darle un mute para que pueda ser escuchado, porque ahora no se te escucha. Yes. Ahora, bien. Okay, ya. Perdón. Okay, ya. ¿Desde dónde continúo, Marta? Vuelve a empezar cuando estabas diciendo que de donde que vendrá gente que no conocía. Sí. Dice la palabra de Dios, gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Okay, the word of God said, people that you never know and don't know you, run to you, run with you. Yes? अब देखिए, आप सब लोग के पास बाइबल है, तो यशायाह के किताब उसका 55 अध्याय का 5 पद, यशायाह के किताब 55 अध्याय का 5 पद, आइजिया चैप्टर 55 वर्स 5। सो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसी जाति को बुलाएगा जिसको तुम नहीं जानते हो। आमीन। सिस्टर, if I say amen, the pastor has to continue. Amén. Esta es la voluntad de Dios para el ministerio que nos ha dado a mi esposa y a mí. Y Marta, trata de coger la idea para yo no perder el hilo, ¿vale? Y esta promesa que nos fue dada hace poco más de 1 año y medio, nosotros pensamos que era una promesa para la gente que estaba aquí en nuestra isla. Nunca nos pasó por la cabeza que pudiésemos estar hoy con gente a tantos kilómetros de distancia. Gloria a Dios. Amen. Listen, my family, my dear family now. Quique
and his wife, Chelo, who is my beautiful friend and sister in all my love, only 1 year ago, received a special commission from God to pray and to look for the people. They was thinking was in Tenerife Island, but no, they know now it's more extensive because you are here and they feel they are talking with you in the spirit of God. Okay? अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, पास्टर कीके और उनकी पत्नी बहुत साल से प्रभु का सेवा कर रहे हैं। बहुत साल से जो प्रभु का सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग ने अभी ये बात को जाना आप लोग को देखने के बाद कि प्रभु कुछ साल पहले प्रभु ने उनको स्पेशल अनॉइंटिंग दिया था सेवकाई करने की, लेकिन अभी आप लोग को देखने के बाद वो सोच रहे हैं, वो और उनकी पत्नी ये सोच रहे हैं कि अभी सचमुच परमेश्वर उनकी आत्मा के साथ बात कर रहा है। अभी वो लोग सोच रहे हैं अभी हम लोग ने ये अनॉइंटिंग पाया, ऐसा वो लोग को महसूस हो रही है। Amén. Amén. Yo me planteé la forma de hacer este estudio un poco diferente. No me gustaría ser yo el que está aquí hablando continuamente, sino que quiero que sea una partición entre ustedes y yo. It's very special for him to say to you right now. He don't want only talk to you. He won't hear you. He won't take time to receive your ask this question and talk together about the win, the God. Okay? He won't पास्टर यहाँ हमारे बीच, प्लीज, पास्टर यहाँ हमारे बीच में केवल परमेश्वर का वचन बताने के लिए नहीं आया है, केवल अपने बोलने के लिए नहीं आया है, लेकिन आप लोग से सुनने के लिए आया है। बोल रहे हैं वो हम लोग से सुनना चाहते हैं, हम लोग के देश के बारे में, हम लोग के सेवकाई के बारे में वो जानना चाहते हैं, बोल के वो ये बातें कह रहे हैं। आमीन। Yo voy a tratar de hablar sobre un cuarto de hora, 20 minutos, con las dos traducciones incluidas. Okay. He wants to talk some more minutes and then translate in English and in Hindi, and then we change to talk together, all right? Okay, yeah. So what shall we, so you want to talk, he wants to talk to everybody? ¿Quieres hablar con todo el mundo, Quique? Quiero hablar yo ahora, hacer una exposición, y a continuación que todos ustedes también puedan opinar sobre el tema que es la fe. Okay, now he wants to talk about the faith. And then when finished in maybe 10 or 15 minutes, he would like to hear you about this. Okay. देखिए अभी पास्टर हमारे बीच में फेथ के बारे में प्रचार करने जा रहे हैं, विश्वास के बारे में। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पास्टर विश्वास के बारे में प्रचार करने जा रहे हैं। यदि आपके पास कुछ प्रश्न है, वो प्रचार के बाद 15-20 मिनट के बाद हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। पास्टर ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर का हमारे पास समय रहेगा। या प्लीज कंटिन्यू सर। Vamos a ir entonces a la primera carta de Corintios en el capítulo 13 y voy a leerles el versículo 13. Please open your Bible in Corinthians 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza. Espera. Corinthians 13. कोरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय। 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13। 1 Corinthians 13, पहला कोरिन्थी का 13 अध्याय का, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय। Tarun, if you are there, please write on the screen, okay? Okay. Tarun, if you are there, please write on the screen. Write the verses. Okay. 1 Corinthians chapter 13.
Okay, amen, sir. Amen. Can you please? Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es el mayor de ellos. Now it's talking about the love, the last 13, when he said, now is the first is hope and love, all then, but the first is love, okay? Okay, अगर 13 का अंतिम वचन आप पढ़ेंगे ना, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों में इन सबसे बड़ा प्रेम है। अब पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का 13 पद अगर पढ़ेंगे तो वहां इस तरह लिखा है। प्लीज, आमीन। Amén. Y leemos también en Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo número 1. Now in Hebrews 11, 1. in Hebrews 1, chapter 1, versículo, me he perdido, Hebreos 1, ¿qué más? No, Hebreos 11:1. Hebrews la fe. 11:1, I'm sorry, it's about the faith too. Hebrews 15:1. Hebrew, yeah, Hebrew chapter, ये फेथ के बारे में है। हिब्रू की किताब मेरे साथ निकालिए। सॉरी, एक्चुअली ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत हुआ। हिब्रू 15 और 11 सिस्टर। 11. या तरुण, कैन यू राइट हिब्रू 11:1? हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 11 का 1। लेट मी रीड फॉर एवरीबॉडी। या 11:1, इसीलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं तो भी इस्राएली हूं, अब्राहम के वंशज और बेन्यामीन के गोत्र से हूं। प्लीज पास्टर कंटिन्यू। Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo han leído, o sea que eso está traducido. Me gustaría ir un poquito atrás y apoyarnos en dos de los capítulos de Primera de Corintios. 11 का 11 मैंने गलत पढ़े हैं। सही नहीं था, आपका गलत था। 11 में एक ऐसा है, दूसरा है। पढ़िए तो। 11 का 1 11 का 1 में पढ़िए। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Yeah, Sister Martha, you can translate what Pastor said. Okay. ¿Continúo? Continúa, Kike. Si leemos en el capítulo 12 de esta primera carta de Corintios, Pablo nos enseña sobre los dones espirituales. En ese capítulo anterior a lo que hemos leído, trata de enseñarnos que el cristiano va a ser equipado con herramientas que las llama dones. Ok, espérate, Kike, porque si no se va a hacer muy largo. Sí, sí. Don't forget that all we have a special gift from heaven for us. The Spirit, the Holy Spirit gives to us something special to serve God in every moment of our life. Yes? That's okay? Do you understand me? Okay, Kike, continue. और देखिए, पवित्र परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमें हर भेद के बारे में हमें सिखाती है, हर चीजों के बारे में सिखाती है। आमीन। Pablo acaba el relato del capítulo 3 en el versículo 31 diciendo, procurad los dones mejores. Paul repeat constantly in the Bible, in this chapter, that we need to look for the best gift for our life. यहाँ हम अगर इस अध्याय में पढ़ते रहेंगे तो यहाँ हमें ये मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो बेस्ट वरदान है उसको हमें ढूंढने की जरूरत है। Mas yo os muestro un camino más excelente. But it's something better, he said. But later he said something is better. Something? Sorry? Something is better. Is the best. Is better. Y mejor, better. Okay, Okay, better. something. Yeah.
Quique, di algo más de idea y se lo Vale. traduzco. A continuación, en el capítulo 13, Pablo nos hace la más sublime interpretación sobre el amor. Something who is the best is the love. That now you understand to me? Paul said to us, something best, not only the gift from the Spirit, but the best in our life is the love. अब देखिए केवल पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है प्रेम, जो हमने पिछले बार भी सुना था, सबसे अच्छा प्रेम. Yes, amén. Y acaba el capítulo 13 con el versículo que hemos visto recientemente. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Then you remember when finished the chapter 13 in Corinthians, 1 Corinthians, now all is the faith, hope, and love, all them, but the most important is love, yes? जैसे हमने पहले पढ़ा था कोरिन्थी का 13 में, आशा प्रेम, आशा धीरज और प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम है बोल के हमने जैसे पढ़ा था. En este capítulo parece que Pablo le está dando a los dones espirituales una escala menor en la vida del creyente. It's not about, Paul said, oh, the gift from Spirit is one is better and other is different. No, all the same. The importance. Do you understand? All the gifts from Spirit are really special for us to serve God. अब देखिए पौलुस ऐसा नहीं कहता है कि और बाकी जो आत्मा का वरदान है वो बिना काम के है बोल के, ऐसा नहीं बोलता है. सब पवित्र आत्मा के वरदान महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन उनसे भी बड़ा एक प्रेम है, इसके बारे में पौलुस हमें कहता है. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así. Pablo desea que los creyentes busquen las capacidades especiales que Dios les ha dado como creyentes en su fe. And Pastor Kike said that, like Paul, he remembered you. Every one of you must to know exactly your gift to use in the ministry, in the place you are now, okay? It's really necessary to know our life, to know our gift that God give to you to serve Him. अब देखिए पास्टर ये चाहते हैं कि हम सब लोग अपना अपना जो प्रभु ने हमें जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को हम पहचाने. जहां भी हम सेवा करते हैं, हमारा अपना अपना वरदान है, वो वरदान को हम लोग पहचाने बोल के पास्टर चाहते हैं. Amén. Pablo lo que intenta en estos pasajes es hacer resaltar dos cosas muy importantes. La primera, que los dones son parte de las herramientas con las que Dios equipa a los creyentes. All of us, you and me, have a special backpack in our life with all we need to serve God in our ministry. All we have. अब देखिए हम लोग सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें प्रभु की सेवा में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. Pero no son portadoras en sí mismas de vida eterna ni tienen poder en contra de las acechanzas del pecado. But all this we have from God is not, ¿cómo dijiste la frase, Quique? Que no tienen poder en contra de la lucha. All that have no power to give you. The power is only for the Spirit in our life. अब देखिए जो प्रभु ने हमें दिया है, किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो हमें ये दे सकता है. केवल परमेश्वर का आत्मा ही ये सारी वरदान हमें दे सकती है. En segundo lugar, Pablo trata de resaltar que están en un orden
inferior de importancia si las comparamos con la fe, la esperanza o el amor. And all the gifts that God give us from the Holy Spirit is wonderful, but faith, hope, and love, these three are the best and are necessary to us. देखिए जो सारे वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है वो सारे अच्छा है, लेकिन ये तीन जो वरदान है जो प्रेम, आशा और ये क्या है, faith, spirit, and love. प्रेम, आशा और धीरज, ये तीनों में ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है बोल रहे हैं. Trata de hacernos ver que estas tres cosas sí que tienen poder para darnos una vida de éxito. Okay. The love, the hope, and the faith, the hope and love have power and very special strength in our life. Only faith, hope, and love. No more. Okay? It's not about money, it's not about language, it's not about anything. It's about hope, faith, and love. अब देखिए हमारे जीवन में विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों है बहुत महत्वपूर्ण है. इससे अलावा एक पादरी के जीवन में और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना तो पैसा ना और कोई और चीज. Además quiere resaltar de una forma clara que dentro de estos tres atributos hay una que es, digamos, eterna y las otras dos no lo son. El amor es eterno y la fe y la esperanza son pasajeras. In the moment when we stay in the heaven, faith, and hope, we don't need. Love is eternity. ¿No? ¿Quique? La fe y la esperanza serán pasajeras. Son pasajeras. Y el amor permanece para siempre. The love always stay with us when we are in the heaven. Faith, we don't need because we are in the heaven. Love, hope, no, it's not necessary because we are in the heaven. But love stay with us always, all in the eternity. अब देखिए लेकिन जो प्रेम है हम जब स्वर्ग में भी जाएंगे प्रेम हमारे साथ हमेशा बने रहेगी. इसीलिए वचन बोलता है विश्वास, आशा, प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम है. En Romanos capítulo 8 y versículos 24 y 25, Romanos 8, 24 y 25 nos dice la palabra. Espérate un momentito. Romanos 8. 24 y 25. Okay, that. You can read Romans 8, 24, 25. ओके, रोमियो 8 का 24 और 25 एक आदमी हिंदी में पढ़ लीजिए जिसको जो क्विक निकालता है. रोमियो 8 का 24 और 25. लेट मी रीड फॉर ऑल ऑफ यू. सबके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं. रोमियो 8 का 24 और 25 यहाँ इस तरह लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखे हैं यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोड़ते भी हैं. Amén. Amén. Dice Romanos, porque con esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? En ese sentido, para nosotros un día acabará la fe y la esperanza, porque estaremos cara a cara
viendo al Señor de señores y Rey de reyes. Amen. One day, when we are in the front God, face to face, we can remember it's not necessary our hope because we are there with him. You know, our faith because finally we are with him. But the love, real love from God always will be with us. अब देखिए पास्टर लोग, यहाँ जैसे वचन में लिखा है ना, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। इसी तरह पास्टर बोलते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में आशा की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में जरूरत है प्रेम की, इसीलिए हमारे अंदर प्रेम रहने की जरूरत है। आमीन। Así que la fe y la esperanza permanecen mientras nosotros permanecemos en este cuerpo de muerte, como diría Pablo. Oh, don't forget, only while we are here in this body, the faith and the hope will be with us. Then, when we are dead in heaven, only the love from God will be with us. देखिए ये आप भूलिए मत, जब विश्वास आशा प्रेम में यदि हम लोग प्रभु के पास होंगे तो हमारे पास केवल प्रभु का प्रेम रहेगा और बाकी कुछ भी नहीं। ये बात को आप मत भूलिए। En aquel día dejaremos de ver a través de un espejo. Then in this day, in this moment when we are dead, it will be like a mirror. Y entonces sabremos, perdón. Translate to. Yeah. Sister Martha, can you repeat? Okay, okay, ya me perdí. In the moment when we are dead, ¿cómo fue la idea de lo que dijiste, Quique? Cuando... Que en aquel día ya dejaremos de ver a través de un espejo. Then, when in the end of the times, we don't see like a mirror. Now we are looking like a mirror. When we are from God, we will see face to face with him. Okay? अब देखिए, अभी हम लोग परमेश्वर को एक आईना में देखा जैसा देखते हैं जब हम अभी पृथ्वी में हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास स्वर्ग में चले जाएंगे तो हम परमेश्वर को अपने आंखों से देख सकेंगे। आमीन। El amor es el único con capacidad de entrar con nosotros en el reino de los cielos. And only the love, only the love, especially love will be with us in the end of the time when we are from God. Love. अब देखिए, जब हमारे जीवन के अंतिम घड़ी आएगी, जब हम प्रभु के साथ चले जाएंगे तो हमारे जीवन में प्रेम केवल प्रेम ही रहेगा, प्रेम के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। आमीन। Amén. Este no es el tema de hoy, naturalmente, pero deberíamos estar un poco más atentos en revisar el significado de amar en la palabra de Dios. He invited us to see really what means love in the Bible. What means really love? So आज हम लोग को ये समझने की जरूरत। What happened? Yes. So, yeah, Tarun, can you hear? Yes, sir. We can hear now. Sorry, there was a little disturbance. ¿Está ya hecha la traducción? I don't know. Continue. Yeah, sister, I'm here. Yeah, I'm listening. Okay. Continúo. Continúa, Kike. Okay, gracias. Thank you very much. Les estaba diciendo que este no es el tema para hoy, pero deberíamos revisar lo que significa la palabra
en la palabra amar. Tengo la sensación en algunas ocasiones que el pueblo de Dios actúa mal en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos tratando con los incrédulos o con los injustos. The question is, sometimes the pastor thinks that we need to remember what means exactly love. We are people for oh God, pueblo de Dios. We are different, and we need to show the world how is the love of God in us. Okay. Yeah. So pastor का कहना है ये बाइबलीय प्रेम क्या है, उसका अर्थ ये कि हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर जिस तरह हमको प्रेम किया, हमें वो परमेश्वर का प्रेम देखने की जरूरत है, ये पास्टर कहते हैं. आमीन. Lo que nos enseña la palabra es algo un poquito diferente. El mandato de Dios es amar a los que nos persiguen y y los que hacen toda clase de mal contra nosotros. En Mateo 5, 44 a 48 leemos. We need to remember that because we are Christians, we must to be different of the world. We can't answer same that the world said, because Jesus' love in us make us different. That's the question. अब देखिए, हम लोग प्रभु के चेले होने के खाते, एक मसीह होने के खाते, हम में परिवर्तन, हम खुद ही परिवर्तन हुआ वाला व्यक्ति होना चाहिए. जैसे दुनिया उत्तर देती है, जैसे दुनिया वार्तालाप करती है, इस तरह का वार्तालाप हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम में परमेश्वर का प्रेम देखने की जरूरत है. आमीन. Amén. Y en Mateo 5, 44, 48 leemos, pero yo os digo. Matthew 5, 40, ¿qué versículo? 44 a 48. 45, 48 said. मत्ती का किताब 5 अध्याय का 45 और 48, 45 to 48. Yes. मत्ती के किताब उसका 5 अध्याय का 45 से लेकर 48 में यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ इस तरह लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगी, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है. क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. आमीन. Amén. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que dice el capítulo 40. Sí. El último capítulo, el último versículo, ¿no? Sí, dile que Para que lo lea él directamente. Okay. Ya lo leyeron y nosotros lo hemos leído en español. Okay. Now in this moment we read in Spanish that you read before in Hindi. Okay. Amén. Yes, sister. I can't hear you. That is in this moment when we are talking is because Kike read the Bible in Spanish that he said like that you read now in Hindi and he read now in Spanish. Esto, amén. Amén. Yeah. क्या बोला? Okay, yeah, please. Amen, pastor. मैं हिंदी में पढ़ा, पास्टर अपना स्पेनिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं. Yeah, please continue, sir. Okay. Creo que este no es el tema de hoy, vuelvo a repetir, pero me parecía interesante que dentro de la fe
podamos entender que tiene que estar unida inevitablemente con el amor. He wants to remember you, and he don't know exactly why, but this is a special comment from him that our faith and our love in this moment of the history of the humanity will be together, because it's a difficult moment for everybody in the world, but our faith and our love will be together. अब देखिए ये अभी सारी दुनिया के लिए मुसीबत का घड़ी है। ये सारी दुनिया में मुसीबत के घड़ी में यदि हम लोग के पास परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस समय में हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम और विश्वास होने की जरूरत है। आमीन। Amén. El amor podrá ser un buen tema para que podamos explicar y ver en otro día. Pero vamos a ver hoy expresamente aquello para lo que nos hemos reunido, que es la fe. We can talk days, months, years about the love, but now he wants to say that especially in this moment he wants to talk about our faith. अब देखिए हम लोग हर एक दिन, हर महीना, हर बात में हम विश्वास के ये प्रेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन पास्टर कीके जो है अभी हम लोग के बीच में विश्वास के बारे में बात करना चाहते हैं। Y creo que es necesario que podamos ver en conjunto la fe y la esperanza, porque creo que muchas veces se confunden los términos. We want to remember you that we don't forget the difference between faith and hope. अब देखिए हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए, ये आशा और ये क्या बोलते, फेथ एंड लव, मींस विश्वास और प्रेम में हम लोग को फर्क समझने की जरूरत है। ये कभी नहीं भूलना। La fe es siempre ahora, no tiene tiempo, está en presente siempre, o podemos decir que es atemporal. Se tiene que manifestar en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Faith is always, is now, is in this moment, is yesterday, is tomorrow. Have no time, have not anything, is forever, is ever. Faith is always. अब जो विश्वास है, विश्वास हमेशा के लिए है, अभी, कल या हर समय के लिए वो विश्वास है। En Hebreos capítulo 11 y versículo 1 leemos: ahora la fe es la sustancia de lo que se espera. La fe... Sí, sigue. Hebreos remember us, the faith is the substance of everything. अब देखिए जो विश्वास है, यदि हमारे पास विश्वास है तो हम किसी चीज से भी हम विजय पा सकते हैं। ये बात ध्यान में दिए सारे पास्टर लोग, यदि हम में विश्वास है तो विश्वास हमारा ढाल है। ये बातें पास्टर बता रहे हैं। La fe le da a nuestra esperanza sustancia. Voy a tratar de explicarlo con una ilustración, Marta, a ver si lo coges. Aquí tenemos por costumbre comer, hacer una comida que llamamos sopa. No sé si esta comida es universal, pero nosotros la llamamos sopa. Y la sopa lleva trozos de carne. Y cuando nosotros llevamos una cucharada de sopa a la boca, aunque no veamos la carne, sabemos que ha estado en ese guiso por el sabor que nos deja. Okay, I would try to explain. He remember us, the faith is like a big soup. You know, you make a soup and you put all the vegetables and meat, maybe, if we have. But sometimes you can find meat in your spoon when you are eating. But you know, one day the meat will be there, giving this
the flower. Do you understand to me? That's the idea about Okay. faith. Yeah, let me explain in my own way. So विश्वास क्या है? विश्वास एक बड़ा सा एक बर्तन के तरह है जिसमें हम सब कुछ रखते हैं। जब हमको जरूरी पड़ता है तब वहां से वो चीज को निकाल के हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को विश्वास कहते हैं। पास्टर बोल रहे हैं। Yes, amen. Amen. Y dice la palabra que la fe le da sustancia a nuestra esperanza, en el sentido de que la fe de igual manera no la podemos ver en la olla, pero vamos a sentirla por la obra que en nombre de ella se hace. Okay, the faith is same that this. Maybe you you can't find in your faith in all that you do, but is what gives you the option to have something really nice. When you remember, you have faith when you are making something for God. Okay. Yes. Can you please repeat once again, sister? Very difficult. A ver, Quique, déjame terminar de coger la idea porque a lo mejor la he liado un montón. Estás explicando que la fe es exactamente igual que Es la carne del caldo. The faith is like this meat in the soup. Probamos el líquido. Would you find you taste and feel the flour? But you don't know, but the faith is y sin ver la carne sabemos que está ahí. You can't see, but you know the faith was. Do you understand? Okay. The विश्वास इस तरह, yes, विश्वास इस तरह है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं विश्वास। ये पास्टर कहते हैं। Amén. Amén. La fe nos dice que tú recibes cuando oras. En Marcos 11:24 dice que la fe está en el corazón. The faith, wait. Marcos what? Marcos 11:24. Marcos 11:24, read. मरकुस 11 का 27 यदि हम पढ़ेंगे तो वहां इस तरह परमेश्वर का वचन में लिखा है। मरकुस चैप्टर 11 27 24 or 27 बार 24 और 27 24 यस। इसीलिए मैं तुम Marcus 11:27. Just a minute. My dogs are barking. Marta. Yes. Marcus chapter 11 verse 24. Let me read. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो गया है। Amén, pastor. La fe está en el corazón y la fe se refiere a tener convicción, a tener la seguridad y la confianza de que existe una fuerza divina la cual se encarga de resolver cualquier problema o petición. No sé dónde está Marta. Hola. I'm here. Can you hear me? I'm here. Okay. ¿Me escuchaste? Sí, pero me he perdido porque me despisté al escucharte todo. Vale. Estábamos viendo en Marcos, capítulo 11:24, que recibimos fe cuando oramos. Y además nos hace ahí una vez más referencia al perdón. Y que la fe está en el corazón del hombre. Wait, don't forget the faith is in our heart. When we pray in our heart, we must remember we have the faith because it's inside of us.
देखिए विश्वास हमारे अंदर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दिल में ये निश्चय रखते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है। इसीलिए ध्यान में दीजिए, जो विश्वास है हमारे अंदर होने वाली बात है। Y en definitiva, la fe crea en nuestro propio corazón convicción, seguridad y confianza. Y nos And dice, it's because we have faith, because we live in faith, that we have conviction in our life, and we can remember to us we belong to God. We are people with faith, with love. We are strong for that. अब देखिए विश्वास ही ये ऐसी चीज है जो हमें ये निश्चयता दिलाता कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं बोल के हमें निश्चयता दिलाने वाला चीज ही है विश्वास है। आमीन। nos dice que existe una fuerza divina la cual se encargará de resolver cualquier problema o petición. And we don't know how, but we know exactly that all around us in our life have a solution, because God gave the solution for everything. अब देखिए हम लोग नहीं जानते ये कैसे होता है, लेकिन हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, दुनिया में जो भी परेशानी है, वो सारा परेशानी का समाधान हम विश्वास में ढूंढ सकते हैं। Pero sin embargo siempre lo hace de una manera muy poco convencional. But not always like our imagine, because the Spirit of God sometimes move in different ways. लेकिन हमको हमेशा ये याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर की आत्मा हमें अलग तरीका से हमें लीड करती है, अलग तरीका से हमें अगुवाई करती है। आमीन। Las pruebas científicas o las evidencias muy pocas veces se dejan ver a través de la fe. No se puede analizar con la razón, como ha explicado Marta. Not always you can use your mind to understand the power of God. That's absolutely true. Not always you can understand. हम बहुत सारे समय अपने दिमाग से हम लोग परमेश्वर का प्रेम को समझ नहीं सकते हैं। En Hebreos leemos que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Continúa la idea para seguirla? Sí, te doy el versículo y lo leen. Hebreos 11:3. Read Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. 11:3. Which book? Hebrews chapter 11 verse 3. Okay, Hebrew. इब्रानियों की किताब उसका 11 का? Yes, Hebrews 11:3. Okay. इब्रानी की किताब उसका 11 का 3 पद हम पढ़ेंगे। कोई एक आदमी पढ़ दीजिए तो, मुझे निकालने में तकलीफ हो रहा है थोड़ा। ओके, हिब्रू 11 का पढ़ो। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों कहते हो, तो कहाँ इसका प्रयोजन है? और वो नहीं है। तीसरा नहीं ना, विश्वास ही से हम जानते हैं कि ये सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। Amén. Amén. Yes. Amén. La esperanza, sin embargo, es un estado de ánimo. But the faith is not always a feeling. La esperanza, hope. The hope, I'm sorry. The hope is, okay. Repítelo, Quique. La esperanza es un estado de ánimo.
our hope is like a feeling. अब देखिए हमारा जो विश्वास जो है feeling, can you please explain me? Can you please explain me in some other way? Marta, te están preguntando. I'm sorry, please. Can you please explain me in some other way? Okay, ¿qué fue lo que me dijiste, Quique? Porque me acabo de despistar con, Sí. con mi nieto. Que sin embargo la esperanza es un estado de ánimo. Anyway, the hope is like a feeling, emotion. Okay, yeah. अब देखिए जो विश्वास है ये विश्वास है एक हमारा क्या बोलते हैं इमोशन के तरह है, हमारा एक फीलिंग के तरह है. En el cual es un estado de ánimo en el cual las personas creemos que alguna situación podrá tener buenos resultados. Okay, when it's and when we feel that emotion, we are expecting that we find that we are waiting. We want that we want. लेकिन जब हम उस can you please repeat once again? And when we are feeling that, when we are feeling hope, we are expecting to receive what we want, what we are waiting for. Okay. So जब हमारे पास जब विश्वास का अनुभव होता है तो हम लोग उस चीज को प्राप्त करते हैं जिस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिस चीज के लिए हम लोग दुआ करते हैं. Yes, amen. Amen. La esperanza tiene que ver con el gozo, con la quietud o con la paz que nos da Dios en nuestros corazones cuando hemos creído lo que Él nos ha dicho. Repite. La paz es el gozo, es también la paz que sentimos cuando entendemos que hemos creído a Dios. Esto es hablando de la esperanza, ¿no? La esperanza, sí. Es un sentimiento de paz, de gozo, de quietud, Okay. de haber... But the hope is a special feeling that quiet inside of us. It's when we know that we receive a special gift from heaven. It's something different. We are not waiting. We are feeling inside of us. Do अब you देखिए understand? जो विश्वास है हमारे अंदर रहने वाली बात है. जब हम किसी चीज में भरोसा करते हैं, किसी चीज में विश्वास करते हैं, यह हमें एक अद्भुत तरीके की आशा दिलाती है हमारे जीवन में. Muchas veces estamos esperando una respuesta de Dios y estamos apoyando nuestra fe en lo que Dios dice en su palabra para nosotros. Many times the people, the Christian, are waiting because have the word of God, and we want that. We are waiting for that because God said me that I deserve that. God said that for me. बहुत सारे प्रभु के जन लोग वो लोग हमेशा इंतजार में रहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे वो कहा है करने के लिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए बोल के. La esperanza mantiene nuestra fe viva hasta que las cosas por las cuales estamos creyendo sean transformadas del reino espiritual y trasladadas a nuestro reino natural. ¿Entendiste la idea, Marta? Se me está escapando cómo explicarlo. Dame otro hilo más, porfi. En cambio, Vale. con la esperanza. La esperanza mantiene viva nuestra fe. Cuando vemos que las cosas espirituales se convierten en cosas naturales para nosotros. Okay, espérate, déjalo ahí. But when we are living in hope, we are expecting like natural, that supernatural things, because we live with that. Did you understand, my brother? Yeah. जब हम विश्वास में जीते हैं, जब हम आशा में जीते हैं, तो हम लोग परमेश्वर का अलौकिक चीज, अद्भुत चीजों की आशा हमारे जीवन में कर सकते हैं. आमीन.
Nosotros estamos hablando hoy especialmente de la fe, pero la fe tiene que producir en nuestras vidas esperanza. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Okay, we talk about faith, but Pastor Kike once said we are expecting about our hope that can make a change in our life, definitely, about we think, we feel in everything. अब देखिए, जैसे हम लोग ने अभी विश्वास के बारे में बात किया, विश्वास हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी सोच को बदल सकता है, और हम जो सोचते हैं वो चीजों को बदल सकता है. Amén. Amén. Y encontramos en Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 7, Filipenses 4, 7. Filipenses 4 and 7 are written. Filipenses. फिलिपियो की किताब उसका 4 का 7. 4:7. 4 dijiste? Okay. 4:7, sí. Yes. Para ti, Marta, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este es el objeto de nuestra fe. Okay, Pastor, can you read that versículo for everyone? Because Pastor Kike read for me in Spanish, and I would like to hear it in English. Okay. And in Hindi. Philippi chapter 4:7. Is it? Philippiyo. Okay. तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के मसीहा यीशु में सुरक्षित रहेगी. Amén. Amen. La palabra fe aparece en el relato bíblico 247 veces. Y solo 3 de esas veces la encontramos en el Antiguo Testamento. We can find a lot of times the word faith in the New Testament, but in Old Testament only 3 times. In the New Testament we can find 247 times, and in the Old Testament only 3. Faith, about the faith. La palabra fe, Kike. Sí, la palabra fe. Yes, faith. Faith. Okay. New Testament में हम faith for 200 how many? I just forget the number. नया नियम 247. 247. अरे यार नहीं. हाँ बोल. 247. हाँ, नया नियम में हम विश्वास के बारे में 200 यार एक बार बोलना समझ जाते हैं. 247 के ओके 247 टाइम हम लोग मिलता है, और नया पुराने नियम में केवल 3 बार विश्वास के बारे में बात किया जाता है. या प्लीज कंटिन्यू. Sin embargo, en el libro de Hebreos, en el mismo capítulo 11 que nos habla de la fe, encontramos muchísimos personajes del Antiguo Testamento a los cuales se les denomina padres de la fe. But in Hebrews, we can read about all the people in the Old Testament who are people in faith, who live in the faith. ओके हम लोग बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जो विश्वास के द्वारा जीवित है, विश्वास के द्वारा अपनी जिंदगी जिया. Que el tiempo se está acabando, para que me lo están diciendo que te lo recuerde, el tiempo está a punto de terminar. Vale, acabo entonces. Okay. En Corintios 12:9. En Corintios 12:9 dice que cada uno de vosotros no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. We don't know about your faith, but Pastor Kike want to say that every one of you live and work in the middle of your faith. So हम लोग सबके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग जिस जगह में कार्य कर रहे हैं वो आपका विश्वास को दर्शाता है. Bueno, y vamos a dejarlo aquí.
diciendo simplemente, o más bien en una plegaria, que Dios pueda utilizar la medida de la fe que nos ha dado a cada uno en la dimensión que el mismo Dios ha diseñado. And he's absolutely sure that the middle of your faith is something that God knows and he wants to use in every moment. Amen. So यहाँ पास्टर बोल रहे हैं आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है क्योंकि आपके पास उतना बड़ा विश्वास है ये पास्टर कह रहे हैं. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. Yeah. Thank you very much, Pastor TK. I would Even like to though say, we don't know the language, but everybody enjoy it. I would like to say something. It's not easy that we are waking now. This is difficult. It's really difficult because I need to hear him. You need to hear me. You need to translate. We never know anything, but we are here trying to speak in the Holy Spirit feeling. Okay. Amen. That's a very great. Great. Thank you very much, Pastor TK. And I'm very much thankful to Sister Martha. If you would not been there, miss, it would have been very difficult for us to understand. So thank you very much, Sister Martha. You've done very well. Good job. Thank you. Yeah. सागर भाई Okay. कौन सा भाषा बोला? Spanish. ग्रीक में या तो स्पेनिश में? Spanish. Dime, Marta. Spanish में. Okay, हम लोग सब ताली बजा के स्वागत करेंगे उनका. Yeah, Sister Martha, and now we are very much thankful to Pastor TK for his time and for the encouraging word about love and faith. Quieren agradecerte muchísimo el haberte tomado el tiempo para bendecir sus vidas y para tomar el tiempo de pensar en ellos y de tenerlos en tu mente y en tu corazón, que básicamente es lo que te están diciendo. Amen. The whole team, I want to thank Pastor from the bottom of my heart. Excuse me? As a whole team, I just want to thank Pastor from the bottom of my heart. Gracias desde lo más profundo de su corazón, Kike. Ahora nosotros vamos a estar muchísimos más. Thank you, Pastor. Now we are lost because we are thinking about you all the time in our lives, and we pray for you, and we try to find everything for you. Amen. That's all. Thank you. Promise. Thank you. Amen. Promise we are thinking in you. Te amo, Pastor. Okay, thank you. Oh, ¿quién ha dicho? Yo también te amo. Okay. Yeah, this is the time now we want to pray for you for the different regions. So we have friends from Nepal. So how many people are from Nepal? Can you just give your name and give your name? You can translate to Pastor. We are just praying for the country Nepal and the pastor who are here in Nepal. Now everybody, you can unmute your mic. Están tratando de introducir, de hablar y presentar a cada uno, pero va a ser un rollo porque espera que yo te lo diga todo. Okay. Vale. Okay. We have people from Nepal. So Pastor, we have a Pastor Mohan, we have a Pastor Obed Chaudhary, and we have a Pastor Dan Bahadur, and we have a Suraj, and we have a Pastor Brother Dhanaraj, and we have a Pastor Indra Bahadur. He's also from Nepal. And we have a Pastor Bikram, Pastor Nandalal, and also here we have some more people, Sister Santi, Pastor Khadak Bika, and Ashish Anand. We have many pastors from Nepal, and I just want you to pray for Nepal and our Nepal. Actually, basically, I'm from Nepal, but I'm serving God here. So please pray for the Nepal. I request every of our. It was the first time in all my life I hear Nepali. Never listened and
Okay, okay. Acá, Yeah. Marta, acuérdate de lo que hablas y ya luego me lo traduce. Privado. I promise que le estoy diciendo que es la primera vez que yo escuchaba a nadie con acento nepalí. Perdóname. No pasa nada. No, pues He después. said to me, hey, what are you talking? ओके आइए सब लोग अपना माइक अनम्यूट करिए हम लोग नेपाल के लिए प्रेयर कर रहे हैं प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड वी आर प्रेइंग फॉर नेपाल एंड द पास्टर्स ऑफ नेपाल यू कैन सी द नेम ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स प्रे फॉर द पीपल फ्रॉम नेपाल and let's especially pray for they are having very hard time pray for them pray for the coronavirus is Están pidiendo encarecidamente que oremos y que le digamos a los demás que oren por Nepal. Necesitan, ellos sienten que necesitan de nuestras oraciones. You feel that you need prayer, and we promise pray for Nepal. Okay? Amen. We pray for all of you. Yeah. Let's pray together, and at last I request Pastor Kike to pray for the friends in Nepal. Okay, Kike, le gustaría que tú oraras ahora mismo por los hermanos de Nepal. Amén. आइए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया Pray. Padre celestial, quiero alabarte en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Quiero darte las gracias, Señor, por la obra en el Nepal, Señor. Un lugar donde es tan tremendamente difícil llevar tu palabra. Yo te pido que levantes allí el poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús puedas disipar todos los imperios del maligno que imperan en aquel lugar. Y que levanten las manos, bendito Espíritu Santo, para bendecir aquel país. Señor, saca al país de la miseria en el que está sumido. Sácale, Señor, también de las dificultades económicas del hambre, Señor. Ya que ese país sea revestido de la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bless them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit, oh God. Bless them, oh God. Lord, Nepal, oh God. You bless the country. You bless all our dear pastors who are in Nepal, oh God. Bless all our joining us in this Zoom Bible study from Nepal, oh God. We really bless them, oh God. Pastor Kike, you can please pray for Nepal and the pastors of Nepal. Hallelujah. Oh, promise to pray for you all the time. My dear family of God, this is a very special moment because I know I can feel the Spirit here. Amen. I know God is with us. मालूम है परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर बहुत सारे चीज हम लोग के बीच में बोल रहे हैं. So I think Sister Martha, you can ask Pastor to pray for these pastors in Nepal. He prayed before for everyone, and the pastor was talking now, was praying for every one of you. Kike, tú estuviste orando por los pastores, ¿verdad? Hace un momento. Sí. Es un pray a los pastores. Sí. And he promised you, and I promise to, believe me, you can be this certain that all the time we are praying for you since now. Because we have a lot of people in different countries praying and upper. Tell me. Yeah, we have some other prayer requests. Please pray for our pastors in North India. We are here, pastor from many different North Indian states. In North India, I think we have in North India we are from more than 7 states. Pastors are here. North India is very tough area to serve the Lord. I request you to pray for all our pastors who are serving in North India. Yes, hallelujah. Can you translate this one? Okay. नेपाल के जितने भी जति पनि मान्छेहरू छन् तपाईहरु नर्थ इन्डियामा रहेका पास्टरहरु र यहाँ सबैको लागि स्क्रिनमा नाम देखेर प्रार्थना गरिदिनुस्. Yes, everybody will pray and Pastor Kike will lead us in prayer for the North Indian pastors. Y todos
van a estar orando, pero les gustaría que tú orases ahora por los pastores del norte de la India que están viviendo auténticas tragedias familiares en sus propias vidas y ministerios. Amén. Padre Celestial, quiero alzarme en el nombre de Jesucristo para que hagas vallado en el norte de la India, Señor. Oh, yes. Para que levantes con tu poder, Señor, todo tipo de fortalezas que puedan realmente ministrar a mis hermanos allá, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas abrir tus manos, que ellos puedan recibir el alimento diario, Señor, que pueda llenar sus vidas, pero también el alimento espiritual, que les mantenga firmes en su fe, Señor. Te pido, Señor, por los hijos tuyos en aquel lugar del norte de la India, Señor, para que sean ungidos de poder en el nombre de Jesús y puedan seguir adelante con el ministerio que has puesto en sus manos. Señor, te doy gracias porque son ejemplos en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú puedas suplir todas sus necesidades, Señor, y que ellos realmente puedan estar saciados, Señor. Gracias, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Thank you, Pastor Kike, for your prayer and for your encouraging word. Let me ask to our pastor if they have any important prayer requests. You can pray for them. Amen. Sister Martha, you can translate. Martha. Yes. But I can't hear exactly what you said. Okay, let me ask if our pastor has some special prayer. I will share, they will share to me, I will share to you, and you can just ask Pastor Kike to pray for that. Él también quiere que tú ores ahora mismo por sencillamente los que están aquí. Aleluya. प्रार्थना कीजिए सागर भाई. Okay. Hello. Es un placer हाँ, hacerlo. yeah, please. एक मिनट वो लोग को कंप्लीट होने दीजिए. Okay, yeah. Pastor बताइए. प्रार्थना कीजिएगा. और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में भी, और पत्नी का लेफ्ट साइड पैर में बहुत दर्द होता है, नहीं चल पा रही है, उसके लिए दुआ कीजिएगा. Okay, so I request Pastor, you please pray for Simon. Here, Pastor Simon is there. He is a very senior pastor. He is serving here in North India, in Bihar. He has a leg pain. Actually, he met with the accident. So pray for his. Pastor Simón. Please share. Yeah, Pastor Simon. Pastor Simón ha sufrido un accidente en el norte de India y están preocupados por él. Es por la persona que te están pidiendo que ores ahora. He is getting pain in his hand, and his wife also not feeling well. Y su esposa, o sea, están teniendo un momento de una necesidad concreta. Amén. Y también están pidiéndote que ores, pues, sencillamente. Amén. El pastor Simón y su esposa. Sí, que han tenido un accidente. Sí, pero su esposa, el nombre. Y la esposa, his wife, name is. आपकी पत्नी का नाम क्या है, sir? Mary नाम. Mary. His wife name is Mary. Sí, Simón y Mary. Padre Celestial, con una palabra tuya bastará para sanarle, Señor. Amén. Señor, estamos muy lejos de lo que ha sucedido. No sabemos a ciencia cierta, Señor, pero queremos poner las vidas de estos dos hermanos, Señor, en tus manos. Que tú realmente puedas coger a Simón y a su esposa Mary, Señor. Que les puedas realmente sanar sus heridas. Señor, que ellos reciban en este mismo momento la orden de sanidad para sus cuerpos si están heridos, Señor. Y que tú realmente puedas de esta manera también hacer que su fe y su esperanza aumenten, Señor. Los pongo en tus manos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. और किसी के पास स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं. कोई नीड्स के लिए नहीं, लेकिन स्पेशल आपके पास प्रेयर. जय मसीह के पास जय मसीह की. मैं जय मसीह. मेरी वाइफ के पित्त में 23 mm के पत्थर, ये स्टोन, उसके लिए प्रे कर. किसको बोलते हैं ओवेद भाई? पित्त क्या बंचो? पीत में उसका पत्थर है. हाँ, पत्थर है. किसमें? पीत का थैली में, पेट में. इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये समझ, ये भूल रहा हूँ. अरे यार एक आदमी बोलो.
Gallbladder stone. Gallbladder stone. Gallbladder, yes. Sister Martha, this Pastor Ashi's wife has a stone in her gallbladder. So please pray for gallbladder. What? Gallbladder. Okay. So there is a stone. You can pray for the healing of Pastor Ashi's Anand wife. आपका पत्नी के नाम क्या है? Savitri. Savitri. His wife name is Savitri. Okay. Es una oración especial. El nombre de la persona es Savitri. Savitri. Yeah, Savitri. Yeah, Y Savitri. no me preguntes mucho más que solamente sé que ellos están esperando que ores por ella. Vale. Padre Celestial, en esta tarde nos gozamos de poder interceder también por Vitri, Señor. Señor, que tú estés allí donde hay la necesidad en su vida, que estés cubriendo con tu poder, que estés tomando el control, Señor, en esta persona, y que tu nombre sea glorificado sobre ella, Señor. Toma a Vitri en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. और किसी के पास gracias. प्रार्थना का विषय है? Marta, Important prayer. Yes. Dime qué. Pardon, me gustaría que les dijese, ya yo lo había hablado con Zagar, pero que le digas a todos que yo formo parte de un grupo de oración, de intercesión, y que ya hemos estado orando por todo este grupo, pero que ahora les puedo ver y que puedo sentir que la oración va a tener un objetivo más directo. Okay, listen, because this is really something special for you. Pastor Kike and his wife, Chelo, are intercessors. They are praying always. In my life, I know many years, they are praying for me, and now they are praying for you. Amen. It's a promise. They write your name. Thank you very now, much. in this moment, he can't see your faces or some faces. But they have something special with pray and promise pray for you every day. Amen. This is a promise. Amen. Thank you. Yeah, Sister Martha, there is one more important prayer. एक मिनट पास्टर बुआ यहाँ एउटा प्रार्थनाको विषय छ पास्टर सिस्टर मार्था देयर इज अ Ravikant and his wife name is Salmina. Sister Martha, there is a Ravikant and her wife name is Salmina, and they are our staff in our school, and the Salmina is a pregnant now. Next week, next month maybe the delivery date. Please pray for her for the safe delivery, and pray for God may provide all the needs during the time of lockdown for the delivery. Que es obvio que todos ellos tienen confianza y están ávidos por sentir que se les respalda en oración. Amén. Ya me olvidé de los nombres que me han dado porque son nombres muy raros para nosotros. Pero lo voy a preguntar porque es obvio que para él es importante. Te lo estoy diciendo porque lo que yo estoy viendo por encima de todo es que necesitan saber que hay gente en otros lados que están orando también por ellos. Amen. Please, can you remember the names? I'm sorry. The names? Yeah. Salmina. I wanted to write the name, but I changed your name. Salmina. Salmina. Okay. Mira, como vamos a estar en contacto, todas estas personas que tienen en oración, nos las pueden hacer llegar en una lista y nosotros las pasamos. Okay. Please, Pastor wants to say something, and it's a favor for you. Write all the names and send a message to him. Okay. Not only now, he wants to pray all days. Yes, Amen. Sure, I will do that one. It's very important. You can't see his wife, Chelo. She is a prayer. Hallelujah. All the time in her necklace. She's a prayer.
It's incredible. Thank you. El taller del alfarero. It's okay. Ya he olvidado hasta la palabra. Okay. Please. Quique, simplemente están esperando que hagas esa última oración. Amén. Padre Celestial, levanto mis manos al cielo, Señor, para que tú realmente puedas proteger a Salmina, Señor. Que con tu gracia, Señor, con tu poder y con tu amor puedas ungirla. Pero quiero pedirte también por cada uno de mis hermanos que están aquí hoy presentes, Señor, para que tú puedas, Señor Jesús, dotarlos del poder, Señor, del Espíritu Santo, para que puedas hacer en medio de ellos obras de fe, Señor, que abran los ojos de aquellos que no quieren creer, Señor, en ti. Señor, úngeles, bendíceles, otórgales todas las necesidades que ellos tienen, darles, Señor, todo aquello que necesitan, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús y despídenos ahora con tu paz, Señor. Amén. सर मेरो पनि एउटा प्रार्थना विषय छ भन्नुहोस् सर मेरो यो सेप्टेम्बर अन्तिममा मेरो पनि बेबी हुने छ अनि नर्मल हुन सक्छ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् न है Okay. Pastor Bikram wife also is a pregnant. Maybe next month the delivery. You can pray for his wife. Bhai Khadak, you can share your prayer. No pray, but you can ask 2-3 person together, and you can give to him to pray for group. Otherwise, it will take more time. Yeah. You can. No. It's not possible to pray for everybody. Yeah, so you can just collect the prayer matter. Yeah. So at least you just share their name and the special prayer matter. Okay. That's what. Yeah. Yes, Sister Martha, Pastor Bikram wife also. She is pregnant. Maybe the next month is a delivery date, and they wants to you to pray for Pastor Bikram. Can you just pray for Pastor Bikram? Of course. Do you want I pray for her? Yeah. Pray for Pastor Bikram wife. Okay. She's waiting. She's pregnant. Yeah, she's pregnant. Next month is the delivery date. Okay. Padre, es tan lindo que estén confiando en que también los vamos a respaldar con nuestras oraciones. Aleluya, Me Señor. siento conmovida de ir delante de ti para presentarte a nuestros hermanos, Amén, Señor. esposos, esposas, Amén, Señor. cuyos nombres no alcanzo ni a recordar, pero sé que tú entiendes, los conoces y sabes y te deleitas cuando sabes que en nuestro corazón estamos sencillamente agitando la varita delante de ti para pedir que les recuerdes, también respaldándoles a ellos. Señor, Amén, qué Señor. honor tan grande acudir en tu presencia, con humildad y con el ferviente deseo de que tú bendigas a tu pueblo, a tus Amén, hijos, Señor. a tus hijas. Bendícelos en lo más profundo de sus corazones y en sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. I feel emotion. Thank you very much, Dr. Pastor. Thank you very much, Pastor Kike and Sister Martha, for the wonderful the fellowship that we have. At last, we just want to pray for you, and we just want to bless you, and we want to finish this meeting. And we have a Pastor Obed Chaudhary from Nepal. Obed Dai, can you just please pray for them? Obed Dai, ये दुईटैको लागि प्रार्थना गर्नुस्. ये दुईटैको लागि. Pastor Obed is praying for both of you. Amén. ल दाइ प्रार्थना गर्नुस् यो दुईटैको लागि. प्रार्थना गरौँ ल. स्वर्गमा विराजमान हुने स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यार प्रभु, तपाईको अनुग्रहको कारण प्रभु हामी यसरी वेबको द्वारा यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभु विभिन्न देश विदेशबाट अनि स्वदेशबाट प्रभु विभिन्न प्रभु तपाईको दास दासीहरूसँग प्रभु यसरी थलोमा बसिकन तपाईको वचन सुन्न अनि सिक्नमा तपाईले सहायता गर्नुभयो। पिता तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै जुन प्रभु तपाईको दास स्पेनबाट प्रभु आफ्नो भाषाबाट जुन प्रभु
कठिन छ प्रभु तपाईको वचनलाई ससनै पस्किनको लागि परमेश्वर तपाईको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुभयो यसरी यसरी विभिन्न भाषाद्वारा प्रभु हामीलाई ससनै तपाईको वचन दिइराख्नु भएको छ जसरी तपाई परमेश्वर दासलाई तपाईले चलाउनु भयो इन रिक्यु दाइजलाई हामी प्रार्थना गर्छौं उहाँको सेवकाई उहाँको परिवारमा उहाँको मिनिस्ट्रीमा परमेश्वर तपाईको आशीष प्रशस्त मात्रामा रहेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौं उहाँको जीवनमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्छौं त्यसरी प्रार्थना गर्छौं हाम्रो बीचमा सिस्टर म्याडम मार्थालाई यसरी अनुवाद गर्नको लागि तपाईले सहायता गर्नुभयो र हामी प्रत्येकलाई बुझ्नमा परमेश्वर तपाईले सहायता गर्नुभयो पिता धन्यवाद दिन्छौं उहाँको पारिवारिक उहाँको दाम्पत्य जीवन उहाँको हरेक क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै जति पनि हामी यो जुमको माध्यमद्वारा प्रभु हामीलाई यसरी उहाँको मुखारबिन्दबाट यो वचन सुन्नमा सहायता गर्नुभयो पिता तपाईँ धन्यवाद चढाउँदै हामी प्रत्येक तपाईको सेवकलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस् प्रार्थना गर्छौं भाइ सागर उहाँको परिवार उहाँको स्कुल उहाँको मिनिस्ट्रीमा परमेश्वर तपाईलाई आशीर्वाद यसरी हामीलाई एउटा माध्यम भएर प्रभु यसरी उहाँहरूद्वारा प्रभु सिक्ने यो अवसर दिनुको लागि धन्यवाद दिँदै प्रभु सारा आदर भक्ति महिमा चढाउँछौं उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा आमेन Thank you. Pastor Habil will lead us in last prayer. Pastor Habil. Pastor Habil will lead us in last prayer. Será la última oración. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपने हम सबों को सहायता मदद किया प्रभु जी अच्छा प्रभु जी वचन के लिए जो फेथ के विषय में सिखा प्रभु जी और उसमें प्रभु जी प्यार और उसमें प्रभु जी आशा ये तीनों में प्रभु जी सबसे बड़ा प्रेम है वो चीज प्रभु जी हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी और ताकि हम दुनिया से प्रभु जी जाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक प्रेम रह जाता है प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं अच्छा वचन के लिए जो प्रभु जी आपके दास को आपने इस्तेमाल किया और दासी को भी इस्तेमाल किया इसलिए धन्यवाद देते हैं जितना भी लोग सुना है पिता परमेश्वर उनके जीवन में बोल और बातचीत कर और वो वचन बने रहने के लिए मांग करते हैं पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के मन में प्रभु जी बने रहने पाए ताकि प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए और लोग प्रभु जी सीखने पाए और प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो प्रभु जी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रभु जी एमडी सागर के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं और जो प्रभु जी उन लोगों को भी इनवाइट किया जो लोग प्रभु जी इसमें अटेंड किया प्रभु जी सभी को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं ये आपका आशीष और आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे ऊपर में बने रहने के लिए मांग करते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना है छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन 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 सबको एक सूचना है इस बार हम लोग सैटरडे नहीं करेंगे फ्राइडे सब लोग आ सकते हैं क्या नेपाल के हमारे भाई लोग क्योंकि हम लोग संडे को उमन मीटिंग रखने के सोच रहे हैं तो फ्राइडे को हमारा मधुसूदन दास हमारे बीच में आएंगे प्रभु का वचन देने के लिए फ्राइडे सब लोग आ सकते हैं क्या हम लोग आ सकते ओके हो जाएगा ओके सो फ्राइडे हमारा एक प्रेयर है उसके बाद संडे हमारा इंटरनेशनल वुमन फेलोशिप होगा सो हमारे बीच में और एक प्रभु का दास आएगा हम सबके लिए आप सबके लिए मैं और मेरी पत्नी विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी जूम में आते हैं हम सबका स्क्रीनशॉट लेके हम नाम बाय प्रेयर करते हैं सो बहुत बहुत धन्यवाद सो सिस्टर मार्था थैंक यू वेरी मच एंड पास्टर कीके thank you very much for your great time and for the great encouraging word. No, it's a pleasure for us, I'm sure. Quique está dándote las gracias a ti y a mí por este momento y le he dicho que el placer era para nosotros. Muy grande. Thank you. Amen. Thank you so much. You are the best one. Okay. God bless you. Okay. Bye bye. Good night, everybody. See you on Friday. Good night. Good night. And you're right. Good night. Good night. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye.